Hello friends, I am back with my new video that is top 25 PHP interview question and answers. So let's start with. So question first is always asked, I think, differentiate between variables and constants in PHP. So the value of in variables, the value of a variable can be changed during execution. In execution type, the value of a variable can be changed, but in constants, the value of variable cannot be changed. And next is what is session in PHP. A session in PHP is a way to store information to be used across multiple pages of an entire website. This information is not stored on a user's computer, unlike cookies. What does PEAR stands for? PEAR stands for PHP Extension and Application Repository. PEAR is a framework and repository for all of the reusable PHP components. Question 4. What? How does PHP loop work in PHP? How does for each loop work in PHP? The for each loop statement is a looping construct that is used in PHP to iterate and loop through the array data types. Mainly, it is used for array data types for looping purpose. So, is PHP a case sensitive language? Means we can use in small letters as well as in capital letters. So let's learn. PHP can be considered as a partial case sensitive language. The variables names are completely case sensitive. जो variables names होते हैं वो completely case sensitive होते हैं, but functions names are not. उसके functions जो है हम case sensitive नहीं कर सकते. What are the different types of variables in PHP? कितने variables होते हैं? तो primary 8 data types होते हैं PHP पे. Is integer, double, boolean, null, arrays, string, resources and objects. And what is difference between echo and print in PHP? Both are the same to print a data in output. So echo can output one or more strings, and print can only output one string, and it always return one. Echo is faster than print because it doesn't return any value, but print is slower as compared to echo because it returns a one value. What are different types of arrays in PHP? Index array first, associative array. Index array is as a numeric array. Associative array, we can associate a value in a particular variable or an array. Multidimensional array. And next is what is null in PHP. So null is a special data type in PHP used to denote the presence of only one value. Means null, you cannot assign any other value in it. In null you cannot any assign value, कोई भी assign नहीं कर सकते हम कोई other value को. Constants कैसे define? How are constants defined in PHP? So constants को हम easily define कर सकते हैं by making a define function. एक define function होता है उससे हम constant को कर सकते हैं. This function is used to define and pull out the values of the constant easily. Next, how are PHP script executed? PHP script कैसे execute की होती है? So PHP scripts can be easily executed for the command line interface. अगर execute करना है तो हम CLI से कर सकते हैं. इसका जो syntax होता है हम यूज़ करते हैं PHP file name और .php करके. What is $_session in PHP? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है इंटरव्यू के टाइम पे. तो PHP $session एक एसोसिएटिव एरे होता है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं वैल्यू को. दैट कैन कंटेन्स ऑल सेशन वेरिएबल्स. हम स्टोर कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं. हम एक बार सेशन की वैल्यू में अपना जो भी डेटा है उसको डाल सकते हैं, फिर उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं, उसके थ्रू स्टोर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं. Explain some of the PHP string functions. कुछ इस जैसे to find the length of the string we use string length function. to reverse a string, अगर कोई एग्जाम्पल जैसे मोहन को हमको रिवर्स करना है तो हम स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. implode, explode, echo functions we used. How to do single and multi-line command in PHP? They are the two ways to use comments in PHP. Single line command can be used using the conventional $, and the multi-line command followed by
slash followed by asterisk and close by asterisk and slash. What are the ways to define a constant in PHP? कितने तरीके हैं constant को define करने के? तो दो तरीके होते हैं, एक डिफाइन फंक्शन से हम यूज़ कर सकते हैं, एक कांस्टेंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं हम अपना कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए. विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज PHP रिजेंबल टू? इट्स वेरी इजी, पर्ल एंड सी. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इन PHP? कांस्टेंट फंक्शन का क्या यूज़ होता है? तो मीन्स कांस्टेंट फंक्शन यूज़ होता है टू रिट्रीव द वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ को, जो प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं जो कांस्टेंट वेरिएबल पे है उसको रिट्रीव करने के लिए. मीन्स कांस्टेंट फंक्शन इज यूज्ड टू रिट्रीव द वैल्यूज़ प्री डिफाइंड इन अ कांस्टेंट वेरिएबल. इट इज़ यूज्ड स्पेशली व्हेन यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द वेरिएबल. जब हम नेम नहीं जानते वेरिएबल का तब हम यूज़ करते हैं. व्हाट आर द वेरियस कांस्टेंट प्री डिफाइंड इन PHP? सो बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो PHP कंसिस्ट करता है. कुछ हैं जैसे अंडरस्कोर मेथड अंडरस्कोर मेथड अंडरस्कोर, सो इट्स रिप्रेजेंट द क्लास नेम. Underscore class underscore returns the class name. Underscore function underscore denotes the function name. So this is the examples of that. What is the use of final class and the final method? It's very easy. Final class cannot be inherited and the final method cannot be override. Means the final keyword, if present in declaration, denotes that the current method does not support overriding by other classes. So what are the some popular frameworks in PHP? There are the many frameworks. There are very many frameworks in PHP that are known for their usage. Some of them are Coding Nighter, Cake PHP, Laravel, Zen, Falcon, Yai2, and the many more. What is the meaning of break and continuous statement in PHP? Break, this statement is used in a looping constraint to terminate the execution of the iteration and to immediately execute the next snippet of the code outside the block of the looping constraint. Continue, this statement is used to skip the current iteration of the loop. अगर इसकी जो मतलब मीन्स इन ब्रेक, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो अंदर जाता है और उस जहाँ पर ब्रेक हम लिखते हैं कोड पे वहाँ से वो ब्रेक हो जाता है और कंटिन्यू नहीं करता एग्जीक्यूशन. आगे की जो कोड होता है उसको एग्जीक्यूट नहीं करता. बट इन कंटिन्यू वो उस चीज़ को मैं जितना अगर उसको कंडीशन जो है उसकी नहीं हो पाती है, जो कंडीशन हम लगाते हैं अगर उसकी राइट नहीं होती, ट्रू नहीं होती, तो वो आगे बढ़ जाता है, कंटिन्यू कर देता है. ब्रेक की तरह वो वहाँ से टर्मिनेट नहीं कर देता है. ठीक. डिफरेंस बिटवीन PHP 4 एंड PHP 5. सो इन PHP 4 नो सपोर्ट फॉर स्टैटिक मेथड्स, but in PHP 5 allows the usage of a static method. In PHP 4 abstract classes cannot be declared, but in PHP 5 abstract classes can be declared. So constructors can have class names in PHP 4, but constructors have separate names in PHP 5. Now, how are the two objects compared in PHP? PHP provides you with the double dollar operator, means double, and the triple dollar operator means equal to operator and the triple operator. So in double operator we only क्या होता है कि हम डबल ऑपरेटर में खाली वैल्यू को कंपेयर करते हैं. मीन्स 2 इज इक्वल टू 2, दैट इज करेक्ट, ओके, इक्वल्स है. बट लेकिन हम उसके खाली वैल्यू को कंपेयर करते हैं. बट इन ऑपरेटर में हम वैल्यू और डेटा टाइप दोनों को करते हैं. मीन्स अगर 2 है एक न्यूमरिक वैल्यू और अगर ट्रिपल इक्वल टू लगा है और 2 है एक स्ट्रिंग, सो ये राइट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रिंग न्यूमरिक है और दूसरे की वैल्यू का स्ट्रिंग डेटा टाइप है. What does the phrase of PHP escape mean? PHP escape is a mechanism that is used to tell the PHP parser that certain code elements are different from PHP code. ये जो है PHP कोड से डिफरेंट है. सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो. मैंने इसमें टॉप 25 क्वेश्चंस इंटरव्यू के आपको लोग के लिए बनाए हैं. आई होप ये हेल्प करेगा आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए. सो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक सब्सक्राइब करिएगा. और अगर इसका PDF चाहिए हो सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिएगा, तो हम उस ईमेल आईडी पे आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूँगी.